Welcome to viewers on my YouTube channel English Linguistic World। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्रोज इन एलिज़ाबेथन एरा। इस लेक्चर में हम देखेंगे बेकन एज एन एसेइस्ट। अगर हम बेकन की बात करें तो बेकन मशहूर एसेइस्ट था। वी कैन सी डैट बेकन वाज फादर ऑफ एसे, बेकन वाज फादर ऑफ मॉडर्न प्रोज। So Bacon occupies an essential place in the history of English throughout the prose. He was the first pragmatics philosopher to have an advanced code of practical wisdom for a successful life. He was the first plasticizing scientist to have given a theory, science and knowledge. तो इसने कौन सी theory दी थी? The science and knowledge. He is the father of modern English prose. He evolved prose style that proved the first time that English could also be used to express the subtleties of throughout in clear sentence. Bacon essay introduced a new form of composition to English literature. Bacon borrowed from an essay from the Montaigne, but adapted it as a suite of his पर्पस। अगर हम बेकन के ऐसे के स्टाइल की बात की जाए, बेकन के राइटिंग की बात की जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि बेकन स्टाइल इज नाउन एज द क्लैरिटी थ्रू आउट द वेल्थ ऑफ आइडियाज कंबाइंड विद द ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड कंसाइज एक्सप्रेशंस। नो डाउट द म्यूजिक ऑफ बेकन्स रिदम इज क्वाइट सब्टल। It shows a firm control of the disciplined sound. The word clauses and balanced. According to legends, it was his essay that Bacon became a great writer of his language, of his essayist, is practical and useful. और इसकी जो कोटेशंस हैं, इसके जो ऐसे के थीम हैं, उन्हें बहुत इम्पोर्टेंस हासिल है। इसकी कुछ यूनिवर्सलिटी पे बात करें, इसकी ऐसे की लाइंस की बहुत फेमस हैं। जैसा कहता है, फार आ लाइज फेसेस गॉड बट श्रिंक्स फ्रॉम द मैन। फिर कहता है कि सक्सेस इज बर्थ राइट ऑफ एवरी वन इंडिविजुअल, कि कामयाब होना हर किसी का एक इनफरादी हक है। उसके बाद कहता है कि रिवेंज इज अ वाइल्ड जस्टिस। तो इस तरह की कोटेशंस इसके एसेज में, बेकन के एसेज में आम है, और जो कोटेशंस आज भी सोसाइटी में कोड की जाती हैं। और अगर इसके स्टाइल की बात की जाए तो ही ड्रॉज हिज इमेजरी फ्रॉम फेमिलियर ऑब्जेक्ट ऑफ द नेचर। His similes are most of time vivid and suggestive. He uses an analogy to illustrate his ideas. Thus, in the essay of the truth, he promotes the thoughts of the man's love lie and pronounces the mix falsehood with truth with the help of analogy. तो यहाँ पे कुछ और लाइंस लिखता है। ही मैनिपुलेट द वर्ड क्लियरिटी एंड डिलाइट फॉर द रीडर थ्रू आउट इन डिग्निटी मैन राइज टू डिग्निटी। बाय पेन्स मैन कम ग्रेटर पेन्स। टू सम अप, हम ये कह सकते हैं कि बेकन्स ऐसे हैव बीन क्लासिकल ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। दे आल्सो ब्रीफ, lucid and clear. Bacon was a rational thinker who expressed his philosophy in straightforward language and concrete images. His essay proved that clarity of thought automatically leads to clarity of expressions. अब हम देखते हैं Bacon as a man of Renaissance. Bacon philosophy is helpful. He was pragmatic and was also interested in the politics and getting his advancement. चूँकि प्रैग्मेटिक्स भी था और पॉलिटिक्स में भी बहुत इंटरेस्टेड था,
So his essay reflect the Renaissance spirit. Renaissance spirits mean rebirth or revival, the down and richer conversation of the Middle Ages. तो इसका जो ऐसे है, इसके एसेज में भी हमें रीबर्थ मिलती है लिटरेचर की, नॉलेज की रीबर्थ मिलती है. बैकन लिव्ड एट द मीटिंग ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वन एंड फेल्ड टू रिकंसाइल देयर आइडियाज. He was the man of Renaissance. He was the preacher of an experiment and research. But his philosophical works are based on worldly wisdom. इसके जो वर्क हैं वो वर्थली विजडम के काबिल हैं. और क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके जो आइडियाज़ थे ये मैकावली की तरह थे. His reflection on public policy takes the color of his age. Like Machiavelli, Bacon believed that power of life lies in skill and shareability, unaffected by the morals. He say in this context, I have taken all knowledge into my province. अगर उसके बाद हम बात करें as a moralist, the moralists have accused Bacon of the teaching devil doctrine for his readers. It has been said about him that he was the wisest, brightest, and meanest of the mankind. Bacon believed in man's ability and capacity to conquer nature. So, he had Machiavellian approach of life. He said that success is birthright of every individual. तो हम ये कह सकते हैं कि Bacon is a pragmatist who ignores moral considerations. He teaches his readers how to become rich, powerful, and successful. His guidelines can undoubtedly be a great wealth to self-seeking practical person. In his essay of Rich, Bacon says that wealth hinders virtue and suggests how a man can become rich. He is worldly wise moralist whose morality has nothing to do with the higher character. Like charity, love, and friendship, he believe in playing safe. Moreover, the Renaissance is unmistakable in certain qualities of Bacon's style. He uses specific Latin quotations. These quotations lend scholarly touch of the essayist, a typical Renaissance trait. To sum up, we can say that the age of Elizabethan in prose writing, English prose developed into loftily and rich instrument capable of expressing all types of ideas, scientific, religion, philosophic, poetic, and personal.